जो जहाँ पे रास्ता खुला है उसके भी मैंने फोटोग्राफ लगाए हैं। रास्ता खुला हुआ है, उसके साइड में उन्होंने बाउंड्री वॉल बना रखी है। हाँ, उसके साइड में बाउंड्री वॉल है। और उसके बाद जो पेज नंबर ये 81 है, उसमें भी बाउंड्री वॉल बनी हुई है। बाउंड्री वॉल के अंदर है सर ये भूटान। भूटान क्या होता है? माय लॉर्ड, व्हाट इज भूटान? भूटान डीमार्केशन के बाद डिमार्केशन पिलर। डिमार्केशन पिलर तो आपने बनाया है खुद, नहीं ये लकड़ी लगा के? नहीं, खुद ने नहीं, प्रशासन ने बनाया 91 कोई के प्रशासन से नहीं बना हुआ है ये। वो भूटान कहाँ से हो गया? आपने कह दिया और हमने मान लिया। नहीं माय लॉर्ड सर, There is no Bhutan. मैंने सारी प्रोसीडिंग लगाई 91 की एनेक्सर 4 माय लॉर्ड। You mean to say that the road is not actually broadened as what you want? It Sir, wants you want it to be more broadened. माय लॉर्ड, Width उसकी ज्यादा होनी चाहिए. यस माय लॉर्ड। That doesn't mean encroachment. पेज 76 पे प्रोसीडिंग है माय लॉर्ड। What is the width of the road? माय लॉर्ड सर, प्रोसीडिंग चल रही है सर, प्रोसीडिंग हैज बीन कंक्लूडेड माय लॉर्ड। ये पेज नंबर 76 पे आया है। फर्द मौका है। यस माय लॉर्ड। तो हो गया है तो नाउ दे अगेन एनक्रोच अपॉन द सेम लैंड माय लॉर्ड। Then go to the Tehsildar. Go Go to the Tehsildar. He will get it checked. We are not going to check it here. I will be permitted to submit a representative. Council appears to withdraw this petition with liberty to make representation before the Tehsildar relating to the fresh encroachments. If there are, the Tehsildar, upon receiving such a complaint, will get the get them verified, and if there is any encroachment, the same shall be removed. 126 Disposed of. Lordship, kindly adjournment from next week. Next week adjournment. ये अर्जेंट मार्क है। अर्जेंट हो गई कितनी? Kindly एक और है कितनी इतनी परमिशन सप्लीमेंट्री में लगाने के केसेस को है? पिछले वीक भी होगी 3 नंबर कोर्ट में। Kindly adjournment from next week. Next week. क्यों परमिशन ली फिर लगवाने की केस को? फिर अवेलेबल नहीं। केस लगवाते हो फिर उसके बाद एडजर्नमेंट करते हो, बेंच हंटिंग, देन आर्ग्यू। क्या केस है? लॉर्डशिप, इसमें सिंगल बेंच के ऑर्डर को चैलेंज किया है। इसमें 10/7/2026 के ट्रांसफर ऑर्डर को क्रैश किया हुआ है। लॉर्डशिप क्रैश कर दिया? उसमें क्या क्या बेसिस पे क्रैश कर दिया? मीनाक्षी शर्मा के जजमेंट पे क्रैश किया है। मीनाक्षी शर्मा के जजमेंट फॉरवर्ड। Once order was executed cannot be interfered as a reason. आहोर का है? आहोर कितना दूर है जालोर से? 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर है। और आपको आहोर किया था? क्यों किया था? एक ही डिस्ट्रिक्ट में? फिर क्या मतलब है? कंट्रोवर्सी ये है कि मीनाक्षी शर्मा डिमांड करता है कि एक बार अगर ट्रांसफर ऑर्डर की कंप्लेंस हो जाए उसके बाद में करेक्शन ऑर्डर नहीं कर सकते। तो कोर्ट में इन्होंने ये सबमिट किया कि
9 तारीख वाला जो ऑर्डर है वो डिजिटल सिग्नेचर है और 10 तारीख वाला बैक डेट में निकाला नॉन डिजिटल सिग्नेचर ऑर्डर है, जबकि दोनों ट्रांसफर ऑर्डर नॉन डिजिटल सिग्नेचर है और दोनों सेम डेट को है। मतलब 10 तारीख को ट्रांसफर ऑर्डर हो चुका था और 10 तारीख को ट्रांसफर ऑर्डर होने के बाद में इन्होंने ज्वाइन कर लिया, तो फिर ये मीनाक्षी शर्मा के जजमेंट से कवर्ड हो गया था, जबकि ट्रांसफर करेक्शन ऑर्डर पहले निकल गया था। करेक्शन ऑर्डर था क्या दूसरा? हाँ, बताइए पहला कौन सा ऑर्डर था? पहला 9/7/2026 जिसमें रिट पिटिशनर का खाली ट्रांसफर किया था, मेरा ट्रांसफर नहीं किया था। करेक्शन ऑर्डर के अंदर अनेक्शर आपका नाम क्या है? परवेज दैया, एनेक्सर 3 ऑफ द रिट पिटिशन मोशन, अनेक्शर 3 पेज 19। ये 9/7/2026 पहला ट्रांसफर ऑर्डर है। 14 नंबर पे रमेश कुमार का ट्रांसफर किया था। हाँ, ठीक है। फिर उसके बाद में करेक्शन ऑर्डर किया लॉर्डशिप, एनेक्सर तहसील कार्यालय भादरा जून लॉर्डशिप, से हाहोर, लॉर्डशिप। ठीक है। इसमें क्लियरली लिखा हुआ स्थानांतरण अधीन, मतलब इसने ज्वाइनिंग नहीं की थी 10 तारीख का ऑर्डर में। इस पे कहाँ लिखा हुआ है? लॉर्डशिप 9/7 के अंदर कहाँ लिखा हुआ है? 9/7 में नहीं, 9/7 वाला तो फर्स्ट ट्रांसफर ऑर्डर है। सेकंड ट्रांसफर ऑर्डर इज करेक्शन ऑर्डर लॉर्डशिप, एनेक्सर 6 पेज 25, सीरियल नंबर 3 लॉर्डशिप रमेश कुमार। इस 10/7 के ऑर्डर को क्रैश कर दिया लॉर्डशिप सिंगल बेंच में। 10/7 को ये मेरा लॉर्डशिप सीरियल नंबर 2 पे जिला कलेक्टर जालोर से तहसील कार्यालय आओ। आपका नाम क्या है? लॉर्डशिप एक बार काइंडली सी जजमेंट परवेज ऑर्डर 4/8/26 का ऑर्डर निकला, परवेज दैया। पैरा 2। परवेज दैया का क्या नाम है? परवेज दैया का लॉर्डशिप नंबर 25 को एनेक्सर 6 पेज 25 सेकंड सीरियल नंबर 2। ये तो नहीं है ना इसमें। नहीं करता। नेक्स्ट पेज सूर्य सिंह चारण को 15 जून कर दिया। फिर तहसील कार्यालय अहोर जालोर से, और तो आप क्यों जाना चाहते हैं वहाँ? ज्वाइन कर लिया मैंने ऑलरेडी वहाँ पे 10 तारीख से 10/7 10 तारीख तो उसने भी ज्वाइन कर लिया। नहीं, उसको वापस रिलीव कर दिया लॉर्डशिप। रिलीव करने के बाद में वापस रिट पिटिशन के अंदर आया एक बार ज्वाइन करने के बाद कैसे रिलीव कर सकते हैं? लॉर्डशिप। आप स्थानांतरण तो वो होता है जो कि है ना, जब तक उसने ज्वाइन नहीं किया था। लॉर्डशिप 9/7/26 को ट्रांसफर ऑर्डर हुआ उसका तो पहले दिन ट्रांसफर हो गया। भादरा 2 से आओ, यू ऑलरेडी वर्किंग एट डेपुटेशन ऑन आवर, ऑलरेडी डेपुटेशन पे आओ। फिर 10 तारीख को जैसे करेक्शन ऑर्डर आया, वो वही डेपुटेशन पे काम कर रहा था, उसने फॉर्मली वहाँ पे एक लेटर दे दिया कि मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। सही बात है, तो डेपुटेशन पे था, पहले से काम कर रहा करेक्शन ऑर्डर लॉर्डशिप पहले आ चुका था। था। आप कैसे, आप क्यों आना चाहते हो यहाँ? लॉर्डशिप मैं रेजिडेंट हूँ, फील्ड एरिया है नहीं और क्या रेजिडेंशियल हूँ, हैं? और मेरी वाइफ जहाँ यहाँ पे मामला पड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है। एक तो वो ऑफिस है, वो तो कलेक्टर ऑफिस में। हाँ, तो कलेक्ट्रेट ऑफिस है, वहाँ तो बाबू का काम करना पड़ेगा। वो ऑलरेडी उसका होम टाउन रमेश कुमार का जालोर है, उसको जालोर में पोस्टिंग दी, मेरा होम टाउन आवर है, आवर में पोस्टिंग दी, और मेरी वाइफ भी ब्लॉक आवर में गवर्नमेंट। जब ज्वाइन कर लिया तो कर ही दिया। सबसे पहले ऐसे बनने से सेटिस्फाई किया अपना आप कुछ नहीं कर दिया, हम जितना हो बैठे उस तरह के ट्रांसफर 10 तारीख को 2 थे, तो ज्वाइन करने उसके वेकेट पे उसने किया ज्वाइन। 10-20 किलोमीटर दूर एक ही डिस्ट्रिक्ट है,
posting order something कर सकता है लेकिन collector within property दोनों से रिक्वेस्ट नहीं है issue notice. One of the contention of the learned counsel for the petitioner is that the petitioner had been posted by the district collector from office of district collector Jalo to Aho, and the respondent, writ petitioner, who had been transferred to Aho from another place, has been posted from Bhadra June, has been posted at the collectorate office. The same was challenged by the respondent, and the learned single judge has quashed and set aside, although it is an administrative order where the postings are in the same district by the district collector, and ought not be treated as transfer from one district to another. The petitioner is working as AO, and his appellant is working as AO, and his wife is also posted at Aho. You should notice in the meanwhile, the effect and operation of the judgment passed by the learned single judge dated 4/8/26 shall remain state. The petitioner appellant shall be allowed to continue to work at Aho. 127. Fair notes. They have filed a caveat in this. They have filed a caveat from Gigmiel and they don't have a copy, They have not given you copy. not of the copy. You, 1 week रखते हैं. day after, day after tomorrow. Item number 81. नाम शो कर दो. Item number 81. They are located. You filed additional affidavit to this. Additional affidavit has been filed today. Yes. Day after tomorrow. Next. 106 and 107. With three lords. The special appeal. I just pass on to your lordship a short list of dates. Lordship, one thing may I mention before the advance also. Before the one thing may I pointed out before your lordship that the subsequently this mineral become a major mineral lordship. Huh? When this controversy was arose at that time, this mineral was a minor mineral loss. Now that this at the time of pendency of this petition before the learned single bench, this petition is also come now it converted to a major mineral. During the pendency when it was before the single bench. Yes, lordship. Then what happened? So that's why I make submission before your lordship that the Union of India is also a important party in this to here now at this stage, lordship, because it become a major mineral. So they are required. So why was they not implemented as a party before the single judge? At that time, we also pointed out this fact before the honorable single bench, but Naya Nivea also.
Which is the judgment which is under challenge? Is the judgment of this is. Which is the judgment under challenge? Well, it is the judgment of 5th 5/11/24. 5th November 24. Yes. 5th November. And you appear for Mr. Gupta? Your Lordship, I'm appearing for JK, this point number 5, Your Lordship. So there is one Gotan limestone and there is one, Yes, sir, that's what I'm. that is also village. May I just submit the details, how the matter is arisen? Because as far as the respondent is concerned, Framework change हो गया. That's Formally भी देते. Then why are you, even if it is regular, if the framework has changed, then why not Union of India be before us? well, Why that to would create not be necessary. complications? That would not be necessary at all. That would not be necessary at all. So Lord, kindly please to see the matter has arisen, my Lord, under the minor mineral concession rules and post the directions of the Honorable Supreme Court 2016. The Honorable Supreme Court directed the state of Rajasthan to frame a policy with regard to transfer of mineral concessions in respect of where there is merger, amalgamation, transfer of shares, or change of directors, etc. Such like transfers were not conceived earlier. So the Honorable Supreme Court directed that the state of Rajasthan should frame a policy and thereafter consider the case of the mining lease in question in the light of the new policy. Until then, status quo was ordered to be maintained by the Honorable Supreme Court. Consequent upon the directions of the Honorable Supreme Court, the state government amended the rules. The 1986 rules, minor mineral concession rules 1986 were repealed and 2017 rules came to be framed by the state government, wherein under Rule 27, earlier under the 86 rules, the transfers were permitted under Rule 15. Under the 2017 rules, the transfers, the provision for transfer was made in Rule 27. And specifically dealing with the types of transfers, such as merger, amalgamation, change of director, change of shareholdings, etc. The state government brought in Rule 27(7) to 11 in this regard. Now, when that was done, I again moved an application to the state government to consider the case as directed by the Honorable Supreme Court. The state government rejected my representation, against which I filed the writ petition before this Honorable Court. The learned single judge at the time of issuance of notice directed status quo to be maintained because status quo had already been directed by the Supreme Court. So the learned single judge also maintained status quo. Ultimately, the writ petition came to be dismissed and this special appeal was filed, and in the special appeal again, there's an order of status quo. So, my Lord, as far as the controversy in question is concerned, the subsequent notification of 2025, which has been brought during the pendency of the special appeal before this Honorable Court. Your Lordship, I have a submission. To That make, would, Your Lordship. Once he finishes, Your Lordship. that is why I was submitting, my Lord. May I just pass on to your Lordships a list of dates so that your Lordships may have a complete bearing of the entire matter before your Lordships. They have the right. They have a list of dates. So, Lordship. but now what had happened You was, just submit, Your Lordship, on the. yes, Yes, Your Lordship. well, May I I'll just explain. On one. Well, I'll just explain, Lord, how that has Now, come may I in. just What- submit, Your Lordship? Your I said query to- has come from Your Lordship, let me answer. Now, Your Lordship, what happens is, this is a 10 square kilometer of a mining lease, 45 of 1993 from Mineral Limestone, Your Lordship. Now, there is a transfer which took place, Your Lordship. There was a partnership from Gotan Limestone Khanij Udyog, which is a partnership firm. What happens is, in the year 2012, in somewhere in March, April 2012, Your Lordship, the partnership becomes a private limited company. The partners. Now, I'm just saying. How are you
Yes, now what had happened prior to that 2012, in 1997, this out of this 10 square kilometer, 2.04 was transferred to me. No. And there's already an order of the Revisional Authority, Your Lordship, which is a